and welcome to one and all. Be the change you want to see in the world. This is the slogan of World Water Day 2023. So wishing you everyone World Water Day and a happy Navratra to everyone. Under the G20 University Connect program, Center of Excellence, Innovation and Education, Amity University, Haryana is celebrating World Water Day 2023. And we are very happy and welcome all the guest and the dean directors. Our esteemed guest is already with us, Dr. Arundeep Ahluwalia, who is an ex-HOD Geology Department, Punjab University, Chandigarh, India. We welcome you, our guest, Dr. Arundeep Ahluwalia ji. Namaskar. We also welcome our dean, directors, HODs from different departments of Amity University, Gurugram, who have just joined us today to celebrate World Water Day 2023. I can see so many HODs, directors have already there. Thank you for joining, Professor Devra, Professor I.S. Thakur, then Professor S.C. Jain, Major General S.C. Jain, Dr. Ela Gupta, I think, yes, Dr. H.R.P. Yadav, I can see them. So a very warm welcome to each and every one. So we are very pleased and happy to welcome all our valued participants who have registered for this program. They are joining, and very soon everybody will join in this particular celebration, that is World Water Day. So as a customary practice at Amity University, Haryana, of offering prayers to Ma Durga Saraswati on all the auspicious occasions. So let us begin this event with the lamp lighting ceremony. So I would request Mr. Sandeep to kindly play the lamp lighting. Kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah Shatru buddhi vinashaya Deepajyotir namostute Deepajyotir namostute Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Thank you, Mr. Sandeep. As we all are aware that Amity University, Haryana, Gurugram has been chosen by G20 India Presidency Secretariat as a part of G20 University Connect program, offered to 75 selected universities in India among 1,000 plus universities. And we are so proud that Amity University is among one of them. World Water Day is celebrated on March 22nd every year. And this day is an opportunity for all of us to learn about water-related issues, be inspired to tell others and take actions to make a big difference in our society. And today's webinar is in the same spirit, and in the spirit of the UN Water Day, and that is aimed at increasing water ecosystem, literacy to all the sections of the society, whatever be the literacy levels and the age of audiences. Though water is the lifeline of humanity, of our water resources, so we are so conscious about all these issues, what is happening nowadays. But I think this is the very, very right platform to celebrate World Water Day. As it has been rightly quoted by United Nations, that we are seriously off track to meet Sustainable Development Goal 6. That is water and sanitation for all by 2030. To accelerate change, we need more actions. So this is rightly said by United Nations. So G20
India presidency offers the universities in India a great opportunity to raise awareness of the youth about the global water crisis and to highlight the urgent need for actions to ensure access, safe, and clean water for everyone. So I'm very happy to share that Amity University, Haryana makes sure that water is utilized as wisely as possible and reused as much as possible to lessen the burden on the water sources at our campus. Amity University, Haryana uses underground bore wells to extract all water needed for domestic and drinking purposes in our campus. For flushing, for gardening, for cooling towers, and for civil construction projects also, we use recycled water, and it is always employed at Amity University, Gurugram. Rainwater harvesting is absolutely adapted at Amity University, Haryana. There is no water discharge outside of Amity University, Haryana campuses, making it a zero waste discharge campus. That is our whole mission. And every drop of used water is recycled at Amity University, Haryana, cleaned and reused for many other purposes. For example, for gardening, for flushing, and for horticulture purposes. So we are very happy to share this thing also, that the Impact Global ranking of Amity University, Haryana, in this particular ranking, Amity has been ranked 32 globally for affordable and clean energy, that is Sustainable Development Goal 7, and 63 globally for climate action, that is Sustainable Development Goal 13, and among top 201 to 300 globally overall. So Amity University, Haryana is always committed towards environment and sustainability. So once again, I extend a very warm welcome to each one of you today to celebrate World Water Day. Our Honorable Vice Chancellor, Professor P.B. Sharma, was very keen to celebrate World Water Day with all of us, but due to one of the important conference today, he could not make it. But as a great academician, as a great leader and a visionary, great human being, Professor Sharma has shared his recorded message for all of us, which would be definitely, we all would like to listen. So I would like to play that video, and I request Mr. Sandeep to kindly play his address. Thank you. What a great privilege and honor it is to have Professor Dr. Ahluwalia to deliver an invited address today at our university on an auspicious day such as the World Water Day 2023. Dr. Ahluwalia, we are truly grateful to you for your sparing highly valuable time to be with us on this very important and auspicious day. On behalf of the Honorable Founder President, Dr. Sokti Chauhan, on behalf of my Honorable Chancellor, Dr. Asim Chauhan, and on my personal behalf and on behalf of the entire AUH fraternity, I extend to you a very warm welcome. Today, as you all know, we are celebrating the World Water Day. Throughout the world, in our own age-old Vedic traditions, water was considered to be the source of life. There is no life without water. That's what we were told right from the beginning. Good quality air and good quality water, they were the two great medicines of the soul provided by God Almighty to ensure that we live a happy and healthy life on planet Mother Earth for as good as 100 years or even more. Jivem Sharda Satam was not merely a wishful thinking, but it was guaranteed on the strength of the purity of the air and purity of water. Water was considered to be the Amrit. That's why we used to sing and say, Ganga Tera Pani Amrit. It is this nectar of divine today is what we are discussing on the World United Nations Water Day. Today we are facing a crisis of the kind where mankind is in search of ensuring
sustainable solutions to ensure water security not only for our generation today but for generations to come. We all know that we had plenty of water. In our own country, I remember the water of the wells, the water body, the water flowing from the river streams was so good and so pure that it was an assurance of a happy and healthy life. Today we are fighting to ensure that we use our science and technology genius to once again ensure that there is no water pollution in our country. We want to ensure that our rivers of divine, rivers of nectar once again flow with the nectar of divinity. And then we will be proud of our commitment to Mother Nature to ensure that this vital component remains as the lifeline of the generations to come. Today, we are also conscious that we bear a great responsibility, especially belonging to the university community. In our own university, we took a firm resolve. The founding fathers of Amity University were very much conscious about the water security for a campus like university like ours. All our Amity University campuses, we have implemented extensive rainwater harvesting to ensure that every single drop of water is preserved and utilized for the cause of the university. But we are also reprocessing the entire wastewater from our campus and reutilizing the processed water to save millions of gallons of fresh water which otherwise could have been wasted by flushing the toilets and for a variety of other uses where the processed wastewater is currently being utilized in our campus. The greenery that you see in our campus is primarily because of the reprocessed wastewater that we have. And much of this is also helping us to maintain the biodiversity so strong, despite the fact that we are at the doorstep of Rajasthan, considered to be the place where water scarcity is a rule of the game. So we are leading by example in water security in our campus. We are also leading by example for clean energy in our campus. And no wonder our Amity University, Haryana, has been rated among the top universities in the world in respect of water security as well as clean energy. In fact, we have been ranked at number 32 for clean and potable water and sanitation from among 1,500 universities worldwide from 115 countries as per the rating of Times Higher Education Impact Ranking. And it is this kind of recognition which is coming to us gives us the conviction that universities in India can lead by example in water security. All our IITs tomorrow, in my opinion, should be totally water secured. All central universities should be water secured. In fact, all universities and large campuses, including the large corporate societies, everywhere we need to ensure that we pay greatest attention both to the rainwater harvesting, to water conservation, but also to reprocessing of the enormous amount of wastewater which we currently produce because of the lifestyle that we have adopted today. I want to see India totally submitting to the cause of Swachh Bharat 2.2 as our Honorable Prime Minister Sri Modi ji has proclaimed. We want to ensure that not a single drop of wastewater is discharged directly into the river bodies and water bodies in our country. This is a great mission, and I'm sure the nation like ours is preparing to respond to this challenge. I was very happy to find that even the city like Kanpur, which was known for enormous amount of water pollution of river Ganges, today is leading by example by reprocessing the wastewater coming from the dirty drains and nalas from the various parts of Kanpur, and they are being reprocessed, and only the processed water is being discharged in river Ganges, resulting into cleaning of the Ganges under the National Ganga Mission. And this is also, in fact, something which we could now replicate at various places in our towns and cities in India, all across. And that way we will be able to show the pathways by which we are able to achieve water security. But I want my younger generation to become conscious of the use of water. Water saved, water conserved is also water saved, and therefore let's pay greatest attention to ensure that no amount of wastage of water is allowed to happen
by our efforts here in the university or wherever we live. And therefore, I think great responsibility rests on the human beings here in India as well as around the world that on this day submit to the cause of water conservation, water security, reprocessing of the wastewater and reutilizing the wastewater also for variety of purposes, in turn protecting our holy rivers and water bodies, enriching the water health of our great nation. I wish you the very best of the time for today, and may I thank you, Professor Ahluwalia, for sparing your valuable time to present to us your expert views and thoughts on how do we go about by creating science and technology solutions for water security for our great nation and for that region, for our world in which we live today. Thank you so much indeed. Thank you. Thank you so much, Professor P.B. Sharma, for your inspiring and motivation words, though you are not here, so we are missing you. And it was great to hear the perspective of Professor P.B. Sharma's view on World's Water Day. And I must say that Honorable Professor P.B. Sharma has expertise in all the areas, whether it is water, wastewater, or whether it is meteorological, or whether it is science and technology, humanities, arts. So he has expertise in all the areas, and it was truly impressive video which has been shared with us. Thank you so much, sir. And now may I have a pleasure of inviting Dr. Arun Deep ji, who is going to deliver his talk on the topic water, the ELIXIR of life, save it. Dr. Arundeep Walia is an ex-head of the Department Zoology at Punjab University, Chandigarh, India. Dr. Arundeep Ahluwalia is a popular speaker on earth and environmental sciences across schools, colleges, universities, science city, IITs, research institutes, and social clubs. He has been a guest speaker in the leading universities of Europe and USA, Australia. He was a member of the US National Committee of UN Program International Year of Planet Earth and Member Outreach Program Committee of IYPE, the International Year of Planet Earth Corporation. He has been on the most TV channels and a columnist in most Hindi and English newspaper. A very warm welcome to Dr. Arun Walia ji, and over to you. Namaskar, Sanjana ji. Let me make it very clear. I'm not at all preaching anything to the learned colleagues who are in this audience. What I'm sharing is my spirit of my outreach and my experiments in creating some sort of a sensitivity in the society. And I'm not trying to convert a huge number. I'm okay if I do it myself, and we do a bit of water saving at home, and keep on doing it. And wherever possible, talk about it without offending anyone, because these days practice impresses better than any preaching. This talk is actually a replica of what I gave on 10th of March in NCRT studios. So I try to take away what was essentially for kids in the talk, and I try to bring it to a senior audience. And with the senior audience too, my humble submission is this: please excuse me if anywhere it sounds condescending, or that I'm trying to boast about any if there's no achievement in it. It's only a realization that even in a city like Chandigarh, we are told by 2030 we may run out of water for the city. There's so many cities already declared in a great crisis across the world, and I understand Bangalore is one. I know, but for the great work Amity University at Gurgaon is doing, setting example to so many others in the world and in the country.
uh, say Haryana as such and Gurgaon as such has a huge water crisis. In fact, I've been coming to Gurgaon because my son used to live there. Now he's shifted to Canada. But uh, I have always a temptation to come to Amity Gurgaon or Amity Noida because the founder chairman Ashok sir has been a great mentor and a patron for my talks. And when we talk long times on all the activities which I do. And this talk and all many other videos of my talks delivered in last many years, happen to be now on my YouTube Earth Talks 365. The NCRT talk also has been edited by some friends in Sirsa and put up on the, it's already there on the NCRT YouTube, but a smaller version is there on Earth Talks 365. So this um, that water is the elixir of life. This was the theme 3 or 4 years back uh, in uh, in the World Water Day celebrations. This year, it's a admission by the leaders of the World Water Day that we have fallen far short of what we thought of achieving, and we need to accelerate our efforts. Uh, I have a fear that we really cannot achieve too much by having a one-day wonder on March 22nd, and that too in our Indian scenario, where most of these our audiences in the schools are busy with exams, etc. So we need to have every day as a water day, and the that it is the elixir of life, uh, and it is the substance which saves our lives, which sustains our lives, and which makes us healthy. This is the best medicine. This is the best food. No food grows without water, and there's no human who can survive without water. There's no healthy lifestyle without taking, uh, I'm told, 1 liter per 20 kilograms weight of the body. So those who are healthy like me uh, have to consume um, 1 liter for every 20 kilos. I will not declare how much I need to, but you can guess I need above 3 liters, maybe 3.5. So, yeah, really, children? Yeah. There is almost nothing in my slides which is original. There's nothing original in what I'm saying. Maybe what's original is uh, my tone and tenor and my obsession with the outreach I do. This was also learned from a scholar whose name even I've forgotten. I met him in a seminar in Chandigarh, and I asked him that this is a great quote. Can I use it? So I just noted down, and somebody recently put it in Hindi. Otherwise, मैं अक्सर हिंदी को अंग्रेजी में लिख देता हूँ. मेरे को हिंदी में टाइप करना नहीं आता. समृद्धि सलिला अदनेह. पानी अमृत है. This is the elixir of life. But सरल भाषा में कहा जाए, prosperity is controlled by water. Most common but essential substance, abused, ignored, and taken for granted. That's the tragedy. That's the tragedy of our lives. And that's the tragedy everywhere. But there are countries which are water affluent, which are water surplus, and their rivers are clean, their lakes are clean, their underground reservoirs, those aquifers are not at all touched by pollution, unless there is some pollution due to some natural causes. At least what's being done
in our subcontinent. I'm saying subcontinent because those lines may be drawn, partition lines may be drawn, but we are the same crowd in all the 3-4 countries which were, all those countries which felt the quake yesterday are the same. कोई फर्क नहीं है हम सब में. पानी, हमारी सभ्यता बड़ी पुरानी है, हम पानी की पूजा करते रहे हैं और दिल से करते रहे हैं, और एज सच हम लोग बहुत साफ सुथरे लोग हैं. हम बिना एक बार नहाए तो हमारा गुजारा होता नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कपड़े फटे भी होंगे तो बहुत साफ होंगे. गरीब से गरीब आदमी साफ कपड़े पहनता है, नहाता है ठीक से. और मैं ये नहीं कह रहा बाहर के लोग नहीं नहाते हैं, पर यहाँ पे नहाना एक हमारी, एक साफ रहना एक हमारी सभ्यता है. शायद हम लोग उस कोरोना काल में भी उतने नहीं मार खाए जितने दूसरों ने खाई. शायद हमारी उस सफाई की आदत, हाथ धोने की आदत हमें कुछ मदद कर गई. तो क्योंकि हमारी एक बैकग्राउंड बड़ी पॉजिटिव है, एक आदत और एक संस्कार पॉजिटिव है, तो हमारे लिए पानी को बचाना आसान होना चाहिए. पर कुछ हो गया है पिछले 200 साल में. ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अच्छा ही होना चाहिए था हम सबके लिए, पर एक बड़ा भारी अभिशाप हो गया. पानी का जो कंजर्वेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये आजकल की टेक्नोलॉजी बताती है आपको कि थोड़ा सा ऐसे समेट लीजिए, थोड़ा एक्विफर्स में डाल दीजिए. पर सच्चाई ये है, underground storage, as a geologist I can say, the porosities and the cavities, porosities in the sedimentary rocks and the cavities in the hard rocks, where those cavities are due to joints and cracks, etc. So the water exploration strategy will be different in the sandy layers or the sedimentary layers. It will be different in volcanic suits like the Central India, Western India, the Deccan volcanics. It will be different in the granitic terrains of South and also Himalayas. It will be different in the Himalayan mountains, and it will be different in the plains. It will be different in the plateaus. So this water exploration is a huge philosophy. It's a huge logistic challenge, and it is an ever-evolving dynamic system. In fact, I have a student of mine who is now famous for his water exploration in Ladakh, and he's been working for Army, Dr. Ritesh Arya. छुटका सा लड़का था ये. इसके 2 मैंने टूर्स कराए थे देहरादून मसूरी के, और काफी नॉटी था, अभी भी है. But he holds a Guinness Book record and a Limca book record on the highest exploration. And I must say, for exciting and motivating the youngsters who may be joining this talk today, or maybe looking at this talk on the YouTube or my channel or on the Amity website later, that he is one of the wealthiest students of my entire life. Dr. Ritesh Arya employs around 200 people, and he comes from a very poor family of Kasoli. He's famous all over Himachal. He is known to the entire political leadership and the entire bureaucracy and the army top notch, because he understood ये जो नीचे लिखा है ना, prosperity is controlled by water. Water made Ritesh Arya so prosperous. अब उसकी मैं टोटल वेल्थ खुले में सोशल मीडिया पे बोलना नहीं चाह रहा, बिकॉज पता नहीं उसने कितनी डिक्लेयर की है, बट बहुत ज्यादा है. सो इतना ही काफी है. प्राइवेटली बता दूंगा कितनी होगी, बट आई वॉन्ट डिक्लेयर द सीक्रेट. बट नेवरदलेस, ये है हमारी असलियत. ये बच्ची सूखे इलाके में, जितनी बेचारी का उसका अपना वजन, एक साथ में अपनी बहन को पकड़े हुए है, उंगली उसकी, दोनों बच्चे
नंगे पांव हैं। सूखे मड क्रैक्स टेरेन में पानी को ले जाने का कष्ट देखिए, इसकी दुर्दशा देखिए, इसका स्ट्रेस देखिए, और ये पीड़ा, ये गृहिणी, ये तो किसी बच्ची ने लकड़ी उठाई है थोड़ी, पर सभी ने ये पानी ले जाने का जिम्मा हमेशा गृहिणी पे आता है, छोटी बच्ची पे भी आ जाता है। और ये पानी ले जाने की बताइए। ये हाँ प्रभात। पानी ले जाने की डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर भी हो सकती है। प्लेन इलाके में तो चलो, मैंने पहाड़ी इलाके में, मैंने हिमाचल में काफी काम किया है। पानी की किल्लत कई जगह पे इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे भी रेन वाटर को स्टोर करके 40 साल पहले, 45 साल पहले जब मैं काम करता था सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, तो वो पानी बारिश वाला ही इकट्ठा किया होता था उसने, और उसी को उबाल के कुछ उसमें डाल के कुछ था सिस्टम उसको सेटल करने का, इम्प्योरिटीज को, और पीने का। और एयर पोल्यूशन जितना बढ़ा है, और उस समय केमिकल इम्प्योरिटीज भी बारिश के पानी में ढेर सारी आई है। और पानी एक सोशल इशू है, पानी एक इमोशनल इशू है। मुझे याद पड़ता है कोई कई साल पहले एक मूवी भी बनी थी शायद पानी पे, शायद उसका टाइटल ही पानी था, कोई आर्ट मूवी थी। तो और इलेक्शन भी अक्सर जब होता है, इलेक्शन में पानी एक मुद्दा होता है। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में एक वेटरन पॉलिटिशियन थे, शांता कुमार जी, बहुत नाम था उनका लगन के लिए और सोशल वर्क के लिए। उन्होंने, मुझे याद है, एक चुनाव जीता ही, चीफ मिनिस्टर थे बड़े लंबे टाइम, गृहिणियों ने एन मास उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि ये पानी ढोने की जो जिल्लत है आपकी, ये मैं मिटा दूंगा, आपके घर तक नल का पानी ला के दूंगा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं कोई इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं हूं, कोई पानी एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरा सिर्फ इसमें जो रोल है, एक इमोशनल रोल है इस बातचीत में। मैंने बचपन में, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, पटियाला में पैदा हुआ था, वहां पे नल का पानी गली तक आता था। मेरे घर में एक कुआं था जिसका पानी पीने लायक नहीं था। इतना मैं तब भी समझता था कि ये वाला पानी पीने वाला नहीं है, ये नहाने का है, और नल वाला पानी पीने का है। उस जमाने में हम नल पे ऐसे हाथ करके पानी पी लेते थे। आज की तारीख में कितने चोंचले हैं पानी के, और कितना खौफ है पानी का। तरह तरह के ये आरओ जिसको बोलते हैं, बड़ा कॉस्टली फिल्टर लगाया जाता है जहां जरूरत हो। गुड़गांव नोएडा में होगी, चंडीगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं। पर यहाँ पे ढेर सारा ये चला हुआ है हिसाब किताब। वाटर पोल्यूशन can be managed with a simple filter, and it need not have, because that RO system wastes such a huge volume of water, and it does lots of things. I will not talk about all those because मेरा वक्त बड़ा थोड़ा है इस टॉक में। बीमारियों की ये कुछ तो ऐसी हैं जिनका मैं नाम बोलना भी नहीं जानता और उनके बारे में डिटेल्स नहीं जानता, बट एक इकट्ठी बातचीत करने की है। तो पानी के जरिए राजस्थान में तो कुछ ऐसा भी है, एक कीड़ा होता है जो आपके सिस्टम में चला जाएगा तो अंतड़ियों को पंक्चर करते हुए वो आपकी स्किन से बाहर आएगा। उसको टेप वर्म बोलते हैं, क्या उसको आपको लपेटना पड़ेगा, अगर कहीं टूट गया तो अंदर ही रह जाएगा। तो बड़ी बड़ी, क्योंकि मैंने घाट घाट का पानी पिया है हिंदुस्तान में और विदेश में, तंबू लगाया है गांव में, आंध्रा के, हिमाचल के, और तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में फील्ड वर्क किया है। और तो बीमारी मैंने देखी है पानी की। ये फ्लोरोसिस जो है,
मैंने साउथ आंध्रा में फील्ड वर्क किया था, और वहां पे इतना खौफ था हम लोगों को कि हमारी भी हड्डियां दांत जो हैं ऐसे हो जाने वाले हैं। ये दूसरी वाली जो बीमारियां हैं, इनकी मैं जानता नहीं, पर एक तस्वीर जरूर मैं दिखाना चाहता हूं हर किसी को, कि पानी का ठीक ना होना और आपका एक गांव में होना जहां पे साफ पानी ना पहुंच रहा हो, हेल्दी पानी ना पहुंच रहा हो, कितनी बड़ी जिल्लत और कितनी बड़ा एक मेंटल टॉर्चर होता है। तो ये वाला जो सिस्टम है, इसका मैंने 3 साल उसमें पौदली इलाके में काम किया, और हम पहले साल हमने गेस किया कि फ्लोराइड से होगा ये, फ्लोरीन जो, और वो फ्लोराइड अक्सर ग्रेनाइट में होता है। तो ग्रेनाइट अब वो लोग नहीं जानते थे। हमने कहा जो पिंक वाली चट्टान है उसके अंदर जो कुआं है उसका पानी ना लीजिए, और काली चट्टान जो है जो गैब्रो जिसको हम बोलते हैं या डोलोराइट, काली वाली में नहीं होगा ये। तो आप दोनों के कांटेक्ट से थोड़ा दूरी का कुआं खोदिए और पानी वहां से लीजिए, बिकॉज ग्राउंड वाटर भी सर्कुलेट करता है, बट इतना नहीं करता है कि इधर से उधर बिल्कुल होलसेल मास पोल्यूशन उसका, फ्लोराइड का उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये कितनी बीमारियां हैं जो पानी से आती हैं, वाटर बोर्न पैथोजन, इनएडिक्वेट water based intermediate, lots of them. As I said, I don't understand these, but I just documented these with the help of some youngsters, because this is the least we can do on World War today, to create awareness about our issues. ये एक दुर्दशा पानी की मैं दिखा रहा हूं, जो अभी एमिटी के लिए कहा गया, मैंने वो साक्षात देखा है। टर्शरी वाटर का जनरेशन, टर्शरी वाटर का यूज, अभी 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 रिसेंटली ही पंजाब यूनिवर्सिटी में और पीजीआई में टर्शरी वाटर इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत जद्दोजहद के बाद भी हमारी यहाँ 104 हाउसिंग सोसाइटीज हैं साउथ चंडीगढ़ में, एक के पास भी टर्शरी वाटर नहीं है। और तो और हमारे पास में कोई वाटर सप्लाई ही नहीं है, बिकॉज टर्शरी वाटर नहीं है, दूसरा पानी कितना यूज करेंगे हम इरिगेशन में। और पाइप फट जाती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कोई हिसाब नहीं है कि पाइप कब लगी थी, कितने साल चल सकती है, उसकी कितनी जिंदगी होगी, कब तक फट जाएगी। और उसके बाद में पाइप फट गई और सड़क पूरा नदियां बन गई। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की, मेरे घर के पड़ोस में ये दुर्दशा थी। और मैंने बहुत साल पहले, कोई 15 साल पहले की तस्वीर खींची थी। आजकल ऐसा नहीं होगा, आई होप, बट ये सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड दिस इज एक्सपोज टू से, मैंने ये गुड़गांव में देखा है। मैं गुड़गांव में जाते हुए वो सदर्न पेरिफेरी रोड से सोना रोड की तरफ उस जंक्शन पे हमेशा देखता एक तालाब बना हुआ है, एक पाइप फटी हुई है और उसमें से ढेर सारा पानी बाहर आ रहा है, और हमेशा ही तालाब बना हुआ है। किसी टाइम पे कम है, किसी टाइम पे ज्यादा। मैंने गेस किया कि जब वाटर सप्लाई है उस वक्त तो ज्यादा है, जब वो नहीं होगी तो एक दिन सुबह सुबह मैं गया, उस पर मैंने वहां की वीडियो बनाई और मैंने ट्वीट कर दिया सीएम साहब को और डीसी साहब को। मैं चंडीगढ़ आ चुका था, मुझे वहां से फोन आया, साहब लोकेलिटी बताइए। मैंने कहा गुड़गांव वालों कुछ शर्म करो, चंडीगढ़ वाले से पूछ रहे हो तुम्हारी लोकेलिटी कहाँ है और कहाँ पाइप फटी है तुम्हारी, तुम अपने शहर में ढूंढते क्यों नहीं हो। वैसे नहीं साहब बता दीजिए, हमारी आज खाट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सीएम साहब ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर मुझे एक्सप्लेन किया वो टर्शरी वाटर था, उसकी पाइप फटी थी, फ्रेश नहीं था। मैं कहा टर्शरी वाटर भी बनाने में, उसको प्रोसेस करने में धन लगता है, टाइम लगता है, आपने क्यों जाया किया उसको, वो कितना काम आ सकता था, कितनी बचत हो सकती थी उससे। कुछ तस्वीरें, वाटर कंजर्वेशन एक बड़ी भारी इंडस्ट्री बन गया है ये मिशन, और इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव फोटोग्राफी, इनोवेटिव स्लोगन्स, ये एक बड़ा भारी प्रोफेशन है। जो यंगस्टर्स इसको सुन रहे हो उनको मैं कहना चाहूंगा कि जैसे वो रितेश आर्या है जिसने एक्सप्लोरेशन में एक अपना जिंदगी बना ली, जो आर्टिस्टिक हैं, जो आर्टिकुलेट कर सकते हैं अपनी भाषा को या फोटोग्राफी और भाषा को, वो लोग इस मिशन में बड़ा भारी सहयोग दे सकते हैं ऐसी इम्पैक्टफुल फोटोग्राफी से। और ये देखिए वाटर स्ट्रेस, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और इधर का वाटर स्ट्रेस इज मच मच मोर
than anywhere else. And ये रिसर्च पेपर जनवरी 2023 के जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से है। इसकी डिटेल तो अभी बात करने का कोई औचित्य नहीं। ये ग्राउंड वाटर रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी सिक्योरिटी इक्विटी, दिस इज सुभज्योति दास 2023। एंड ये मैंने थोड़ा सा डाटा इकट्ठा किया था इधर से। ये एक राइट है, ह्यूमन सोशल इंडिविजुअल कलेक्टिव राइट है। और पानी का भी राइट है कि पानी को हम दुर्दशा ना करें। एवरी रेनफॉल इन इंडिया इज 1100 millimeter and global is 700 millimeter। एवरेज इतनी है, पर फिर भी हमारा ढेर सारा एरिया जो है नियरली 60% इज रेन फेड अनइरिगेटेड ड्राई लैंड। मैं पुणे में गया था पिछले साल, तभी मैंने 2 आर्मी पब्लिक स्कूल्स में बातचीत की थी एनवायरमेंट की, डिजास्टर्स की और पानी की। वहां पे मैंने देखा झाड़ियां तो सूखी जाती हैं, मिट्टी सूख रखी है, मड क्रैक्स हो गए हैं, पेड़ मुरझा रहे थे, पेड़ मुरझा रहे थे। कितनी दुर्दशा आप समझिए कि पेड़ मुरझा, और वो इलाके में हमेशा ये है। और ये जो यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे, ज्यादातर इरिगेशन में जा रहा है। तो डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रीज, पावर, और ये सब कुछ हमारी टोटल दिशा दुर्दशा हालत का बयां इसी से होता है, इसी से होता है। और ग्राउंड वाटर, ये एक बहुत ग्रेट जियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर बीपी राधाकृष्णन, ही इज नो मोर, ही वाज अ फेलो ऑफ इंसा। इन्होंने बहुत लिखा 10-15 साल ऑन मिशन वाटर सिक्योर इंडिया। इनके कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने इकट्ठे किए उनके एडिटोरियल से। वाटर ऑन द ग्राउंड इज इवन मोर प्रेशियस देन प्रेशियस मेटल्स एंड मिनरल्स। वाटर इज अ क्रॉप, a resource to be cultivated, nurtured। संजना जी, आप मुझे बता सकती हैं, जब मेरे 5 मिनट रह जाएं, मैं उन 5 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, श्योर। अभी वैसे कितने हैं बताई दो आप, लगे हाथ। अभी तो you have 15 minutes. Okay, fine, thank you। Nurtured, stored, harvested over a long period of time। BPR gave India a futuristic vision of water management in arid and especially hard rock areas। BPR was a votary of indigenous solution to the water management problems based on local water movements, adopting traditional knowledge and practices। हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि फिरंगियों से अपनी सॉल्यूशन पूछने लगते हैं, जबकि प्रॉब्लम हमारी है, हमारी सभ्यता में सैकड़ों साल से हम उसको झेल रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं। मैंने साउथ में देखा, छोटे छोटे तालाब थे और वो हर गांव में होते थे, और इतना सुंदर लगता था वो गांव, और वही उनकी इरिगेशन में काम आ जाता था, और उसी का कोई ना कोई जुगाड़ होता था। वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता था, और आसपास में बहुत हरा होता था, सुंदर होता था। बीपीआर साहब ने एक तरीका बताया कि आप एक कंटूर, मतलब एक ही हाइट के लेवल पे बंड्स बनाइए, स्टोन लाइंस रखिए ताकि पानी उसके आगे ना जाए, और उसी कंटूर लाइन पे रोज ऑफ ट्रीज लगा दीजिए, सो दैट ये तीनों मिलके पानी को थोड़ा रोक लें, या जाए भी तो वो बड़े सुंदर एक वाटरफॉल के तरीके से जाए, और ग्राउंड वाटर की जो क्षति होती है वो भरपूर हो जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। चंडीगढ़ में जब मैं आया था 1962 में, 12 साल का लड़का था मैं, 9th क्लास का, मैं बड़ा खुश हुआ, पटियाले से आया, मेरे को पानी नहीं भरना पड़ेगा नल से, 24 घंटे पानी आ रहा था तब। और फिर दोबारा ये हुआ कि लोगों ने उसको टूटियां खुली रखी, खूब उसका बेड़ा गर्क किया, और 2 टाइम पानी आने लगा। अब हम लोग जो है, वो फ्रेंच सपोर्ट है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उन्होंने कंडीशन डाली है कि आपका स्मार्ट सिटी में तो 24 घंटे का पानी होना चाहिए। वो फ्रेंच को क्या पता कि हम लोगों को फिर दे दोगे 24 घंटे का, तो हम फिर वही भट्टा बिठा देंगे, फिर आ जाएंगे उसके 4 घंटे पे। तो एनीवे, ये रिचार्ज वाला जो मुद्दा है, इसकी मैं उदाहरण इसलिए आपको बोला था। अभी हमारे यहाँ पे पंजाब से कैनाल वाटर आ रहा है जो बहुत अच्छा है, पीने लायक है, और पूरी सप्लाई आ रही है चंडीगढ़ को, और मोहाली पंचकुला की भी थी सप्लाई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हमारे पास ज्यादा आ गई। हमारे 350 या 400 ट्यूबवेल्स जू के तू चल रहे हैं,
करोड़ों करोड़ों रुपया फूका जा रहा है, और बिन बात के पानी को जो अच्छा खासा फिक्स डिपॉजिट था, जो भविष्य के लिए ऑन ए नॉन रेनी डे यू कुड यूज इट, मुसीबत में आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। इनफैक्ट भगवान ने अंडरग्राउंड वाटर, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स, ये फिक्स डिपॉजिट बनाए। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, नालायक बच्चों के लिए एफडी खोल देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट किया कि ये निकम्मा है, पता नहीं पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, ऐसे दिया तो वेस्ट कर देगा, धीरे धीरे करके पैसा रहेगा हमारे हाथ में रहेगा, पर इसकी सिक्योरिटी के लिए रहेगा। भगवान ने ये सिक्योरिटी दी हुई, वाटर सिक्योरिटी, और ये सिक्योर किया हुआ है, पर हम लोग जो है पानी की इज्जत नहीं करते। और यही कारण है, ये देखिए, ये राजस्थान के जोहाट्स हैं, जो अर्दन डैम्स, दे हैव बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी ट्रेडिशनल विजडम है, जिससे पानी भी हुआ इकट्ठा, रिचार्ज भी हुआ ग्राउंड वाटर, और एरिया ग्रीन भी हुआ। इवन मरुस्थल में बारिश होती है इतनी कि गुजारा चल जाए। टोटल ओशनिक वाटर इवापोरेशन से वो सूर्य देवता बड़े मेहरबान है, उन्होंने एक डिस्टिलेशन प्लांट लगाया हुआ है सब नलायकों के लिए, इंसान जितने हैं, क्योंकि हम ही लोग गैर जिम्मेदार हैं। वो पक्षी, वो बेचारे मवेशी और बाकी सभी प्राणियों को भी पानी चाहिए, उनका गुजारा हो जा रहा है। और हम लोग 40,000 cubic kilometers is the annual rainfall on the continent. 40,000 cubic kilometers. Huge volume. Huge volume. Today morning, I interacted with little kids in a school close by, Banyan Tree School. There, I told them 40,000 cubic kilometers. वो पंजाबी थे बच्चे, वो तो बहुत ज्यादा हो गया जी। मैं कहा हाँ बच्चे, बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी वो अपा उन सुट देईदा है, वो वापस चले जाता समुद्र च, वो कहती जाना तो नहीं चाहिए, पर अंडरग्राउंड उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, डैम्स में स्टोरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। सो आप उसको वेजिटेशन में स्टोर कर सकते हो, हरियाली में स्टोर कर सकते हो। हरियाली कभी नुकसान नहीं करती। अभी देहरादून में मैं गया था यूकोस के एक साइंस सेमिनार में, साइंस फेयर में, वहां मैं जज था। एक लड़के ने अपना प्रोजेक्ट दिया, नदियां सूख गई हैं, चश्मे सूख गए हैं। एक बार बोला, दो बार बोला, रिमोट सेंसिंग से पता लग गया, वो बड़ी गिनती कर रहा था। तो मैं लास्ट वाला था, तो हमारा डिनर डिले हो रहा था, पर मैंने पूछ लूं इससे, मैं बेटा क्यों सूख गए? वो कहते जी सूख गए। मैं क्यों सूख गया, बता तो दे, इतनी रिसर्च करी तूने, मेरे को कुछ तो बता। वो बोलता है कि क्लाइमेट चेंज। मैं कहा वाई? मैं कहा तू आ तो उत्तराखंड से रहा है, सच बोलने से डर रहा है? नहीं जी, मैं क्यों डरूंगा। मैं कहा मैं बताता हूं तेरे को निडर होके, करोड़ों करोड़ों पेड़ काटे हैं तुम लोगों ने, करोड़ों पेड़ काटे हैं। पेड़, बारिश वहां होती है जहां पेड़ होते हैं, और पेड़ वहां होते हैं जहां बारिश होती है। ये एक अच्छा साइकिल भी हो सकता है और एक गंदा साइकिल भी हो सकता है। पेड़ काट दिए तुमने, अरे मैंने कहा तुम सोचो कितनी, तुम्हारे दिमाग से कितने पैदल हो, तुमने घास में काट दी। जगह जगह पे वो एक तो कार, बेकार की कार होती है, जो जिसकी कोई जरूरत नहीं होती हम लोगों को, मोस्टली ऐसे ही बेकार में लोन लेके किसी को दिखावे के लिए रखी होती है। कभी जरूरत पड़ती है तो आजकल तो उबर भी मिल जाती है। वो कार की पार्किंग के लिए, इवन हमारी यूनिवर्सिटी में वो जो पार्किंग बनाई गई पेड़ों के बीच में, उसके लिए वो जो पेड़ों की जड़ें थी, quintals, hundreds of quintals of the roots of the old trees, veteran trees. Trees are like our family members. वो जब काट दोगे आप, तो पेड़ तो गए ना काम से, और उस धरती की बारिश के पानी को संजो के नीचे स्टोर करने की कैपेसिटी घट गई, और देर सवेर वो पेड़ भी बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर पानी से प्यार है, एक ही काम करिए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ को ना कटने दीजिए, चिपक जाइए पेड़ से। वो चिपको मूवमेंट दोबारा से हमें चलानी पड़ेगी पेड़ों के लिए। और एक बड़ा भारी काम हुआ है हमारे देश में, सड़क चौड़ीकरण। सड़क चौड़ीकरण एक ऐसा दुर्भाग्य का काम हुआ है, थॉटलेस ब्रेनलेस काम हुआ है, जिसमें क्या हुआ, करोड़ों पेड़ कट गए, और पूरे हमारे जितने पठार थे दक्षिण के, वेस्टर्न घाट्स के और हिमालयस के,
पहाड़ों का बेड़ा गर्क हो गया। हरे भरे पहाड़ आज ग्रे हो गए। उन्होंने पेड़ काटे, फिर स्लोप्स पे मीटर मीटर के कंक्रीट के डैम खड़े कर दिए लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। पहले लैंडस्लाइड रुक जाते थे छोटी मोटी ईंट लगाने से, अभी क्या है, कटिंग वर्टिकल हो रही है हर जगह पे। फटाफट करना है, बड़ी जल्दी है साहब। कहते हैं हमें देहरादून से बद्रीनाथ 2.5 घंटे में पहुंचना है। अरे मोहताइया में कहा भैया तुम्हें 2.5 घंटे में पहुंचना है। तीर्थ यात्रा भावना से होती है, सद्भावना से होती है, सब्र से होती है। उसके लिए अगर आपको गोली की तरह जाना है और गोली की तरह आना है, अरे ना जाओ ना यार। अभी भगवान की दया से शायद वो जो हेमकुंड साहिब है उधर की तरफ रोड नहीं बनाई, भगवान करे इनको याद ना है कि वहां पे भी सड़क बनानी। जहां जहां हम लोग श्रद्धा से जाते थे, सुंदर हिमालय में जाते थे, बढ़िया पहाड़ों में जाते थे, जिनकी हम सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से पूजा करते आए हैं, हमारे मन में हमारे भगवान वहीं पे बसते हैं, हमने वो सब पहाड़ उजाड़ दिए हैं। वहां के सभी पानी के स्रोतों का, चश्मों का और नदियों का, नालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम पानी का दिवस, विश्व दिवस क्या मनाएंगे? हमें एक बार बैठ के सोचना है। यू हैव टू सिट एंड पॉन्डर। ये होगा, उसके बाद में फिर पानी कहां जाएगा? और हमारी अगली पीढ़ी, जिस तरह का पोल्यूटेड पानी हमने कर दिया है, नदियां, हम पहले तो उसका ऐसे पी लेते थे ना, आजकल तो सुनते नहा भी नहीं सकते उस पानी में। किसी इतनी एकेडमिक ऑनेस्टी नहीं, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी किसी में नहीं है कि बोले भैया नदियां, जो जो लोग नदियां को पूजते नहीं उनकी नदियां बड़ी साफ है। हम बड़े पुजारी हैं नदियां के, हमारी नदियां गंदी है। हाँ, पंजाब के बच्चे इंस्पायर कैंप में आए हुए थे, वो बच्चे पंजाबी में ही बोलना चाह रहे थे। रामास्वामी साहब आए हुए थे, डिप्टी सेक्रेटरी, डीएसटी सेक्रेटरी रिटायर्ड। वो बोलते हैं सर जी सानू दसो साडे वो खूਹਾਂ ਚ पोल्यूशन सुटता, साडे नदियां नालियां च सुटता, साडा ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया जी, हुण ਅਸੀਂ ਕੀ करिए? मैं कहा बेटे ओनली सॉल्यूशन टू पोल्यूशन इज डाइल्यूशन। भगवान की वेट करो। वो कहते जी वो तो बारिश ते बाद जाएगी, ये तो सुट्टी जांदे। सो दिस इज a problem to which the academic like us have to come out with boldness, courage and intellectual honesty. We should not be bothered about who will be displeased by our honesty. We have to be honest to our next generation and their next generation. जितना पोल्यूशन हमारे पानी में इस वक्त आ गया है, हमारी अगली पीढ़ी बीमार पैदा होगी और उससे अगली पीढ़ी पैदा नहीं होगी। हम कितने बड़े पापी हैं कि अपनी ही अगली से अगली पीढ़ी का जो कष्ट है वो हम देख नहीं रहे, उसके लिए हम बोल नहीं रहे, और हम वी आर बीइंग एक्सपीडियंट, वी आर बीइंग पॉलिटिकली वाइज, वी आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट पॉइजन गोइंग इनटू। एक नवजात बच्चे के खून में पोल्यूशन चला गया, एक मां के दूध में पोल्यूशन चला गया। ये हम पानी बनान, एक कभी कभी अखबार, ये खासतौर पे हमारे हिंदी के अखबार ऐसी गजब की वो फीचर्स निकालते हैं पानी के दिवस पे। ये हिंदी का अखबार, मैं बचपन से हिंदी का अखबार पढ़ता था, मेरी सारी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी माँ हिंदी की स्कॉलर थी, मैंने अंग्रेजी और हिंदी इधर ही से सीखी थी सारी। वो देवकीनंदन पांडे, मेलो डमेलो की खबरें और हिंदी का नवभारत टाइम्स और ट्रिब्यून, ये यही आता था हमारे घर में। हम पानी बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी चाहिए तो उसे बचाइए। घर बचाइए का मतलब है उसको पोल्यूशन से भी बचाइए। अदरवाइज पानी है पर पोल्यूट हो गया, पीने लायक नहीं है, इरिगेशन के लायक नहीं है, खाना पकाने के लायक नहीं है, तो काहे का पानी? फिर तो जहर है ना। घर में अगर पानी की इज्जत सीखना है तो राजस्थान वाले से सीखे, वो हिमाचल के उस एरिया से सीखे जहां की गृहिणी 4 किलोमीटर से पानी का घड़ा लाती थी उन निठल्ले मर्दों के लिए जो बैठ के हुक्के पी रहे थे, उनके लिए 4 किलोमीटर से। ये है हमारा समाज। पानी इज सो लिंक्ड टू जेंडर एक्सप्लॉयटेशन कि पानी पिएगा तो मर्द भी, पर लाएगा नहीं। वो एक ग्रेट आदमी था वो शांता कुमार, जो इलेक्शन जीत गया पानी के ऊपर ही, और भविष्य की पीढ़ियों को भी इलेक्शन लड़ने होंगे पानी पे। जो नहीं पानी बचाएंगे वो मरेंगे जहरीला पानी पी के, उनके बच्चे भी उनको गालियां देंगे, पोते पोतियां भी देंगे, और जो बचाएंगे वही हमारे आशीर्वाद और प्रार्थना के हकदार होंगे। घर में हम इन 9 तरीकों से पानी बचा सकते हैं। लीकेज रोकें,
ब्रश करते समय ये तो सब कह देते हैं पर करते नहीं। नल बंद कर शेविंग करें। शावर की जगह बाल्टी बचा सकती। ये एक शावर की मुसीबत ये है कि वो शुरू में गर्म पानी नहीं आता ना, वो कहते थोड़ी देर चलाओ फिर आएगा, थोड़ी देर चलाओ। अरे तुमने अगर मिक्सी करना है तो थोड़ी देर चला के ठंडा डाल लो ना, बाद में गर्म आएगा, तुम्हें प्रॉपर टेम्परेचर का मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बर्तन धोएं तो आप उसमें भी कुछ जुगाड़ कर सकते हैं कि उस पानी इकट्ठा कर लीजिए, फिर हर उसके लिए। कार ऐसे धोते हैं बंदे बाहर में जैसे भैंस धो रहा हूं, भैंस को नहला रहा हूं। अरे कार, मेरा एक दोस्त है फिजिक्स का प्रोफेसर, वो एक मग में अपनी पूरी कार साफ कर लेता था। अब ये हमारे लड़के आते हैं जो कार साफ करने वाले, वो चौड़े होके 4-4 बाल्टियों में की कार साफ करते, पूरी सड़क गीली कर जाते हैं। वॉशिंग, और जहां जहां पानी फेंका गया है कार वाला, उसमें थोड़ा सोप भी रहता है, वहां वहां सड़कें टूटी हैं। जहां जहां पाइपें फटी हैं घरों में, वहां पे वो घर टूटे हैं। और जब भूचाल आता है तो जो जिन घरों में स्टील को रस्ट लग गया है इस लीकेज के कारण, वो घर पहले टूटेंगे। अब भूचाल अगर कहीं दोबारा आ गया उतना तगड़ा, तो आप मार्क माय वर्ड्स, द वेट पिलर्स, द वेट ब्लॉक्स will be the first to crumble. So lesson is, prevent any seepage, change pipes in time. And now pipes last 50 years, 60 years. So be done with the leaking pipes. Be done with it, because you can change pipes, but you can't change the steel in the pillars and in the ceilings. वॉशिंग मशीन का पूरा इस्तेमाल करिए, पूरी भर जाए तभी धोइए, नहीं नहीं दो दो कपड़े ना धोइए। टॉयलेट लीक तो आजकल टॉयलेट मैंने अमेरिका में देखा था कि वो पानी थोड़ा सा ऊपर रहता है। पहले हमारे टॉयलेट्स में पानी फ्लश में थोड़ा नीचे रहता था और ढेर सारा पानी आता था तो फ्लश होता था। अभी वो एक झटके में नीचे चले जाता है और थोड़े से पानी से ही फ्लश साफ हो जाता है। सो देयर आर मॉडर्न एंड स्मार्ट वेज टू यूज लेस वाटर इन ए टॉयलेट। बाल्टी से कार धोने से भी बचता है पानी। ये आरओ मशीन, ये भी एक बड़ा भारी जुल्म है पानी पे, इसकी भी छुट्टी करनी होगी हमें। आई थिंक ये दो वाटर साइकिल के पोस्टर्स हैं, एक बड़ों के लिए है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का, यूएसजीएस। ये यूएसजीएस एक बहुत ही उम्दा साइट है, इस पे एजुकेशनल ट्यूटोरियल बहुत मिलते हैं, हर फील्ड के वालों को मिले। अर्थक्वेक की भी जानकारी कल हमें एकदम से यूएसजीएस की साइट से मिल गई थी, और ईमेल्स रजिस्टर्ड विद देम एंड वी गॉट इट। एक पोस्टर जो है ये बच्चों के लिए है। बच्चे इसके माध्यम से, बिकॉज काफी प्लेफुल है, दे विल अंडरस्टैंड द स्टीम फ्लो एंड द ड्यू रन ऑफ एटसेट्रा मोर, दे वुड लव टू। इनफैक्ट आई हैव अ ग्रैंडसन हु इज 7 years। उसका ये प्रोफेसर अशोक साहनी ने मुझे ये वाटर बजट का भेजा था, थोड़ा ये पढ़ा नहीं जा रहा, दैट द स्फीयर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अर्थ वाटर। इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन है, थोड़ा ग्रेन फट रहे हैं तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, but that's the crux of the, and again this is also from US Geological Survey। and आप देखिए थोड़ा सा पानी हमारे लिए काफी था, इतने सारा पानी हमारे काम का नहीं था। वो अमीर देश है ना जो, वो ये दुबई शुबई वाले, ये लोग उसको फिल्टर करके फिर उसमें मिनरल्स डाल के पी रहे हैं, अच्छा खासा लगा रखा उन्होंने हिसाब किताब। और हमारे यहाँ ठीक ठाक पानी आ रहा था, हमारे चश्मे सूख गए, हमारी नदियां सूख गई, या जो पानी था उसमें जहर डाल दिया हमने, नहाने लायक नहीं रहे हम तो उसके अंदर। So several countries, including India, are comfortable with water because of that 40,000 cubic kilometers of water raining annually. Issue is not scarcity, but purity. It's conservation and sharing. We are well on the way to global crisis for drinkable and irrigation water due to multiple pollutions. A few more Fukushima-like mishaps and even our ocean. Fukushima polluted the ocean waters. So mark my words, we have to respect water. We have to love it. If we love our kids and grandkids, we have to love it. We have to fight for the rights to have drinkable water. Otherwise, that generation is not yet born. But whenever it's born and born sick, they will ask, हमारे बड़े बुजुर्ग इतने बेवकूफ क्यों थे, इतने सेल्फिश क्यों थे, इतने अंधे क्यों थे, इतने बहरे क्यों थे, उन्होंने हमारे हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। आइए हम अपने ही बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए आवाज उठाएं। यही है संदेश इस वाटर डे पे, कि हमें पानी को बचाना है वेस्टेज से,
पानी को बचाना है पोल्यूशन से, और पानी को बचाना है अपने उस केयरलेसनेस के, उसके एक फजूल के मजे का कि साहब मैं जरा 15-20 मिनट शावर के नीचे खड़े होके थोड़ा ठंडा हो जाऊं, वो वाला मजा वो छोड़ दीजिए कनाडा और अमेरिका के लिए, उनके पास पानी बहुत ज्यादा है, हालांकि उनको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर बहुत ज्यादा है, अपने पास नहीं है. We are we have a very good rainfall, but we have uneven rainfall. We are not able to share it across the country. So जहां जहां जितना है हम थोड़ी सी अपनी आदतें सुधार लें. नमस्कार. Thank you very much for the patience and apologies, Sanjana, for taking a little extra time. Thank you so much. No problem, sir. Thank you for sharing your wonderful thoughts on water and common points, yet so important points to reinforce on how to save waters, how to save water. So thank you and wonderful lecture you have given. And we have a few questions there. Sir, I would like to read those Shall I questions. stop sharing this? Yes, yes, please, please. Yeah. Yeah, first question is from Purva Priyadarshini that good afternoon, sir. Sir, I have a question. Why is the water consumption so high in the Indian subcontinent, even though India receives so much rainfall annually, and how can we conserve water in our daily lives? So the student is from our ASAP, Amity University, Haryana department. I think you have already answered in the last discussion, but still you can just. Consumption is so high for irrigation. And fact is this, हम वो भी भेड़ चाल में क्रॉप सिलेक्शन कर रहे हैं. हर कोई चावल उगा रहा है, जरूरत नहीं है ना. पंजाब में, हरियाणा में उसको लगा के बासमती उगाओ, इसमें पैसा आएगा. And that's not good for the environment. It's Yes. we are wasting water, and those farmers could be much richer with some intelligent, अगर उनको ठीक सलाह कोई देता कि चावल के चक्कर में ना पड़ो, पानी भी बचाओ, बिजली भी बचाओ और ऐश करो. तो these are small things जहां पे academics and the society together have to communicate with the farmers. Yes. And we have a lot to learn from the farmers, not to teach them. Yes. And when we talk to them, we have to talk with great respect and humility. हमें फार्मर को जलील करके उससे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सच में हमारा वो अन्नदाता है, सच में अन्नदाता है. Absolutely correct. Next question is from Harneet Kaur that how can we manage the degrading water table due to extensive urban development, and what can be the probable sustainable solutions? This is from Harneet Kaur, Assistant Professor, ASAP, Amity University, Haryana Department. पेड़ लगाओ और पेवर ब्लॉक जितने लगाए हैं सबको उखाड़ के फेंक दो, घास उगाओ, छोटे डेकोरेटिव प्लांट्स लगाओ, बिकॉज पानी जाएगा नीचे कैसे, वो तो बह जा रहा है. बारिश हुई और गटर में गया. If you are purchasing car, you must know driving. Driver is the second option to make you like little bit. Okay. So the next question is from Ritika Verma that watershed management policy can improve water conservation scarcity. So why not we are implementing such policies in India effectively? कागजों में तो सब कुछ है, कागजों में सब कुछ है, और जो रिसर्चर्स हैं समझते हैं, एडवाइस सब देते हैं. थोड़ा सा कम्युनिकेशन, हमें थोड़ा सा लोकल भाषाओं में बातचीत करनी होगी किसानों से. अगर हम उनके साथ बात करते भी अंग्रेजी हाँ कहेंगे तो क्या खाक समझेंगे वो. और अपने आप को अंग्रेजी आने से हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखा और बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं समझना चाहिए अपने आप को. नॉलेज एंड डिजायर टू बी यूजफुल एट ग्रास रूट्स, वो है हमारी एजुकेशन. अदरवाइज वी आर अ फेलियर इन कम्युनिकेशन. If we fail to communicate with those who are the end users of our knowledge, फिर काहे की knowledge? Very nice. I got this one question on my WhatsApp because she is unable to post there, and she is saying that, ma'am, I'm unable to post my question due to poor network.
I request you to please post a question from my side, as it is discussed in the webinar about wastage of water due to carelessness and lack of planning, and hence we all are facing the issue of scarcity of water. How we can overcome this issue through wastewater recycling at habitation level. From Shashi Mehta, ASAP, Amity University, Haryana. See, if Amity University, Haryana can do the recycling, why can't all campuses and all societies and all schools do it? It should be made mandatory. उन पे जुर्माना एक बार लगाइए ना कि आप टर्शरी वाटर या तो हम देंगे, आप पे करिए. और यहाँ तो at least 8 years I've been asking the administration of Chandigarh कि आप टर्शरी वाटर दीजिए इन सभी सोसाइटीज को. In fact, I requested them, penalize them in case they don't use tertiary water for irrigating the parks. इस शहर में ना पार्क्स में सोसाइटीज में इरिगेशन होती है, ना कोई जो छोटे मोटे लॉन है, हमारे गमले हैं, उनमें हम पीने वाला पानी डाल रहे हैं. पार्क्स में जरूर आ गया. Thank you, Dr. Ahluwalia. You are really passionate about this topic, and this topic is very close to your heart. And it was great hearing your thoughts and insight on it. I would request Professor Devra to say a few words. Professor Devra, can you hear me? Okay. At the beginning, actually, I wanted to thank the organizers for giving me this opportunity. In fact, I wanted to, and also insightful talk by Professor Arundeep, who is also very impressive, and then he brought out so many new points. And then, of course, though they are common, but these things are known, but implementation is a very big task. Of course, what he has narrated, all those drawbacks, and then definitely we have to rectify those things at probable places and then probable reasons. In fact, at the beginning, our Honorable Vice Chancellor also told some of the things like water security, rainwater harvesting, recycling of wastewater, saving of water. And then these things actually very, very important thing, but of course we have been hearing, but the implementation again, I wanted to emphasize. And in addition to these things, Dr. Arunji also added the water pollution. Of course, that is a never-ending problem. Of course, still efforts are being put, and then now those efforts are not sufficient. I wanted to pose here, I wanted to tell one more thing, that is rain enhancement. See, where from this rain is coming? Once the rain is available, water is available, we can think of all these things, pollution or scarcity, recycling, all these things. But where from this water is coming? What are the things to be done for that? So actually, I wanted to brief 1 or 2 sentences on that. In fact, I myself was involved in cloud seeding experiments, rain making experiments, rain augmentation experiments, where we enhance the rain. Say, for example, some of the desert areas, there is no drop of rain. So we used to go with the DC-3 Dakota aircraft and then seed the clouds so that we enhance the rain. In fact, we all know that there are 2 basic types of clouds. Clouds are the main sources for this rain. Actually, we have warm cloud and cold cloud. Warm clouds are low-level clouds. We use the seeding material different for different clouds. So warm clouds, actually, literally, warm cloud is a cloud whose base is below the freezing level. Freezing level is nothing but the 0 degrees centigrade. So for this type of clouds, to enhance the rain, what we used to do, we used to seed the cloud with sodium chloride and soapstone mixture. And then if it is a cold cloud, we used to seed with silver iodide. So these are all the ingredients we use for the clouds. Of course, this is one way. In fact, we have succeeded 25%, 24 years. We have done this type of experiments in Pune, over Baramati and Sirur regions, and then we have found about 24% enhancement in rain. This is one important thing. Of course, because the lot of expenditure is involved, because aircraft is involved, so government is not doing, but they have done in some of the expertise available. So some sufficient number of years. That is one thing is to be enhanced. And then another important point Dr. Arundeep has raised, that is scavenger. Rain, of course, is one more important point is whatever maybe the pollution is there in the atmosphere. Once the rain falls, then most of the pollution is washed out. So rain is a very good element for scavenging of all your pollution. Similarly, clouds also.
clouds also take up so many pollutants which are being generated either naturally or artificially on the ground surface. So clouds and then rain, they are to be regarded as the solutions or mitigation processes for all these pollution type of things. And once you improve the rainfall over a particular place, particularly our desert areas, the problems are very much solved. But of course, once the rain should be available, then all this type of scavenging processes and then water security problem, all these problems will come later. First of all, this is also one of the important points, how to increase the rainfall. What are the methods available? What are the cost-effective methods? Not just simply method, cost-effective methods. So these are some of the things we have to concentrate simultaneously. So the problems related to the water, all this, most of the problems can be resolved once we think of the water enhancement also, the cloud seeding experiments, or similarly ice cloud enhancement, where the high cloud, see, some of the time the water through rain comes just like a small cell, but heavy rain. This type of rain occurs mainly due to low-level clouds. We call them as cumulonimbus clouds, dark clouds. So sometimes we have continuous rain, but no much rain, drizzle only. This type of cloud, this type of rain comes from high altitude clouds like cirrus clouds. So that's where actually, while seeding these clouds, different materials are to be used. Single material will not work. And the most important thing is the platform, like aircraft. Some places we have done, even the high altitude, we go to mountain top and then seed the material, because when you stand on a mountain top, clouds will cut across you. So such reasons actually we have to make use to enhance the rain. These are all some of the ideas I wanted to indicate. Thank you so much, Professor. Thank you very much. Thank you so much for sharing your additional important points with us. Professor Ayush Thakur, please say a few words. I just want to say that, first of all, Professor Devra, in fact, he raised the question also, he suggested solutions also, but how much cost effectivity it will be, that also he told. So that's great. Regarding Professor Ahluwalia, I can say that the way the Professor Ahluwalia is raising the questions, in fact, and the way he is presenting the things, it is really remarkable. And I can say that Professor Ahluwalia is very famous. In the way he is talking to the people, it is going to the common people, and it is really greatness to him itself. And if there is a problem, raising the problem itself is a great thing, and solutions the people will search of his own. So these are a couple of things are very interesting. And Professor Ahluwalia, of course, since very beginning, I know him very well since last several years. And the way he's talking, the way he's presenting, and also particularly as the Amity University is there, or Amity University faculty and students are concerned, they will learn a lot of things from Professor Ahluwalia, and they will move forward for the solutions that he already narrated, in fact. So with that one, I must extend my heartiest thanks to Professor Ahluwalia for coming over here for his presentation. Excellent presentation, Professor Ahluwalia. Thank you very much. Thank you, Dr. Thakur, for your wonderful words. Professor Major General S.C. Jain, can you say a few words? On the outset, I will say that Dr. Arundup has brought out the importance of water, that water is prosperity. Now this, I would like to amplify. The future prediction is the world wars are going to happen on water wars. Now, how these water wars have, the beginning has already started because of the scarcity, that is Middle East, Central Asia, Africa. The undercurrents are already there. There is a scarcity, and in the times to come, maybe down the line, 15 years, 20 years later, the wars are going to be on the contours of wherever there is a scarcity. Now, just to give an example of the army, we are given everything in the morning. You drink as much water as much you want. Just given 1 liter, we have to travel 50 kilometers with just 1 liter of water. So that kind of a discipline is inculcated in the soldier, so that
the importance of water is well understood, that how much to be conserved, where to be utilized. And there are religions like my own religion, Jainism, the water, the preciousness of water, it is taught, practiced, and if the society follows these kind of examples, they will definitely prosper more. So thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, Major General Jain, for your wonderful words. Dr. HRP Yadav, you want to say a few words? Thank you, Dr. Sanjana ji. At the outset, I must express my sincere thanks to Dr. Arundeep Ahluwalia for his very relevant presentation. He talked about the change of mindset of the human being to conserve the water as a whole. He didn't touch the internal things of how water is formed, how water should be transmitted, distributed, but basically he highlighted how water can be conserved and how the water can be treated for drinkable water. So that is the main idea he has left amongst us. I hope the faculty and students must have been benefited by the illustrious talk delivered by Dr. Arundeep Ahluwalia. Since my area also falls like the environmental protection, and water is an essential component for the environment, so I would like to understand that how to change the mindset so that water can be conserved in complete manner. Because to change the mindset, it's not that easy. We understand the water is very precious. We understand that water should not be wasted, but still we are wasting the water in our day-to-day life. So it is really a Herculean task how to preserve, conserve water, and how to make the untreated water treated, and how to remove the pollution from the water. That is the main challenge before us. We have to pay our heed on this conservation as well as treatment of water. Thank you very much. Thank you, Dr. HRP Yadav, for your words. Yes, I request all the participants to mute their audio. Yes, you have rightly highlighted that we are talking so much about preserving the water, but practical actions has to be very, very important to take further so that we can save water. Dr. Ela is also with us since starting of the program. Dr. Ela, few little words from your side. Yeah, thank you so much, Sanjana. And I must congratulate Dr. Ahluwalia. It was a very, very interesting talk, very enlightening and very interesting way of talking and influencing people, I must say. So as we have been discussing, water management has to be tackled at various levels, right? From individual level, community level, local level, city level, regional, till national and global level. So there has to be various initiatives taken at all the levels. And we, coming from architecture and planning fields, we are aware and we have incorporated, integrated all these water management practices in our curriculums. But yeah, definitely our efforts need to be strengthened, as very rightly quoted by Dr. Sanjana initially, as per UNDP, that we are seriously off track, and all the efforts which we are making are still not enough. We are in the beginning stage of it, and we really, there is a long way to go. We really need to put more efforts in this. And that's all I have to say. We keep working towards water management, and let's hope for the best results in the coming future. Thank you, Dr. Ela, so much for your inspiring words, because all these things we have to reinforce again and again so that we can see the results. Dr. Kushagra is also with us. Can we have few words from Dr. Kushagra? Can you open your video, Dr. Kushagra? Yeah. Yes. Just a minute. Thank you very much for this opportunity. Am I audible? Yes. Okay. So this is really a nice moment to have the deliberation from Professor Ahluwalia. We have a great association with him.
And this is the second time that he has been with us and discussing a very relevant topic. As he already told that the solution of the water problem is not a rocket science, it is everyday wisdom. He mentioned about the condition of Rajasthan. He basically drew our attention that even the least rain-fed area of the country can be the model of the sustainable water availability. It can ensure annual water availability. Like the city like the Jaisalmer, it used to be in the middle of the desert, but it has a history of more than 1.5 millennia. And it was a very flourishing city. So how a desert city can survive? Because common human wisdom. They store water and they survive their life and they flourish like anything. And there was historical documents that Jaisalmer has the trade connection with the Sumerians and other countries. I mean, the under previous historical trade association. So my take is that one more example I want to give. In Rajasthan, in Rajasthani dialect, there is more than 50 words for the cloud. Why so? Because this is very less rain-fed, and the 50 different words for the cloud is really, it indicates something that the human is very much curious about water. When the rainfall, although is scanty, they are ready to capture it, to harvest it. So the solution of the water is basically lies in everyone's hand, but it doesn't mean that our policy and the government is going to play with it. And the best example and the worst example is the river Jamuna. In spite of pouring money like anything, Jamuna is day by day deteriorating. So where the problem is, we are worshipping Jamuna on one side, and another side, it is the Nala. So we have to think that only engineering solution is not going to percolate down. Your solution must be according to environmental rule and environmental understanding. It is also going to be synchronized with the social considerations. So this is my take on it on very auspicious day of the World Water Day. And I once again thankful to Professor Ahluwalia and the team who has organized this event. Thank you very much. Thank you, Dr. Kushagra, for your wonderful words. Dr. Seema, are you there? Can you share a few words? So we have not much time. Dr. Seema Pathak, are you there? I think Dr. Seema Pathak, are you there? Can you connect? Okay, Dr. Amir. Yes, good evening, one and all. Thank you, Dr. Sanjana, for giving me this opportunity. So about water, Ahluwalia sir has already explained the importance of water in his wonderful presentation. I have few words for Dr. Ahluwalia. I had the opportunity to learn a lot from Ahluwalia sir during my master degree in Punjab University, Chandigarh. So, I realized he's a vast ocean of knowledge and a great motivational speaker. The testimony of which we just witnessed, how beautifully he presented and highlighted the importance of water. So his motivational words on environment and water resources during classes inspired me to work in the field of hydrology. So thank you, Ahluwalia sir. And regarding water, I have few things. We know the problem, we know the solution. Most of the solutions we know, as Dr. Arundip Ahluwalia has already explained. But these measures should be considered seriously and implemented on the ground level. With this, thank you, Dr. Sanjana, once again for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Amir, and thank you, everyone. Today, we have heard from experts, especially from Dr. Arun Ahluwalia and from other experts who are on the panel. They all are expert in this particular area, and they have talked about the challenges and opportunities related to water management and conservation. So we have learned about the innovative solutions. They are very simple solutions, yet we need to implement in a different parts of the world, and the role that each one of us can play in protecting the precious resource is very important. So thank you, everyone. Through today's webinar on our celebration on World's Water Day, it is important to remember that water is our lifeline, and access to clean and safe water is our fundamental human right.
So we must continue to work through simple ways towards, I should be saying, ensuring that everyone has access to this basic necessity. Thank you all. Thank you, Dr. Ahluwalia ji, for your wonderful session. And let's all take this opportunity to renew our commitments towards sustainable water management, both as an individual and as a global community. And I am very sure that working together, we all can ensure that water is used widely and that is available to meet the needs of current and future generations. Thank you so much, Dr. Ahluwalia. Thank you so much, Professor Devra, Professor Dr. Ela, Major General S.C. Jain, Professor HRP Yadav ji, I.S. Thakur ji, and Dr. Amir for being with us today on this platform for the celebration of World Water Day. Dr. Ahluwalia, we will be definitely in touch with you for our future academic endeavors, and I will speak to you for one of the program which is there in my mind for further activities. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bye-bye.